everyone. कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? Good evening. This is Dr. Vani and on behalf of Vedantu Biotonic, India's truly most trusted bio channel, I welcome you all to a series. इस series में अगले 5 or 6 days में the top alternate careers which are there apart from obviously doing MBBS or apart from cracking the NEET 2022, I'm going to tell you. तो आप में से बहुत बच्चों ने हमें बहुत फॉर्म्स पे मैसेजेस पे पूछा, मैम क्रिमिनल फॉरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बनना है, एग्रीकल्चर में करियर कैसे करना है, फार्मेसी में करियर कैसे करना है, सो मेनी, इफ यू वांट टू बिकम वेटनरी डॉक्टर्स, मैम वो कैसे करें, हाउ डू यू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मैम हाउ डू यू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक एमएनएस नर्स कैसे बनना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग विद यू. व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस, व्हाट आर द सैलरी एक्सपेक्टेशंस, how do you get into these colleges, what are the exams that you have to crack, और एक बहुत honest review है कि exactly आगे चलकर आप if you have these career options तो आपकी life आगे चल के कैसे रहेगी. So let's get started everybody and let me tell you in detail how exactly can you become a biotechnologist, right? चलिए तो आगे पढ़ते हैं. Exactly है क्या बेटिया? देखिए, आप बायो पढ़ते हो, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो इन चीजों को जब आप यूज करते हो, रीसेंट टेक्नोलॉजी जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा था दीज जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आप में से कितने लोगों के घरों में लोगों को किसी को डायबिटीज होगा तो कोई दवाइयां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, all the drugs, all the vaccines, all the pharmaceutical industry works, all the food in the preservation industry, all the organ grafts which are being produced, cutting edge technology के साथ these people work to produce products that can help human and environment. मान लीजिए Pseudomonas putida के आपको spores बनाने हैं, there's an oil spill somewhere, you have to work deep down because there's a gas leakage somewhere. So it's a very interesting career, it's a very rewarding career, it's like this perfect beautiful mix of biology and technology and therefore it is called as biotechnology. जेनेटिक सॉल्यूशंस, कल को मान लीजिए कहीं ग्राफ्टिंग होनी है, ग्राफ्टिंग करके कोई ऑर्गन्स बनने हैं, राइट? ऑल दीज काइंड ऑफ सुपर कूल साइंस फिक्शन काइंड ऑफ थिंग्स इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू क्रिएट सॉल्यूशंस. आपने पढ़ा है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जहां पे एडीए की डेफिशिएंसी होती है. टुमारो you want to preempt a disorder, you find out there's a disorder, you want to find a genetic cure for that disorder, and all of this is a reality. People are actually doing this. Right? This is not something that we're talking about ऐसा होगा. This is a reality. People are doing it. So modern day challenges, food supply कम हो गई है, कोई disease का outbreak हो गया, environmental issues हो गए, oxygen की कमी हो गई है. You have to make artificial oxygen and all these things. This is what biotechnologists will do. So मेरा mandate या मेरा verdict ये रहेगा that this is going to be one of the most sought after fields. बहुत demand होने वाली है इस field की. इंसुलिन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फ्लावर, सैलड, टोमेटो. लेटेस्ट भी तो बहुत पुराना हो गया. लेटेस्ट इज द वैक्सीन जिसके 2-2, 3-3 शॉट्स हम सबकी बॉडी के अंदर है. दैट इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी. तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाओगे, देयर आर वेरियस वेज. आप बीटेक बायोटेक कर सकते हो. अगर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की साइड पे जाना है तो आप बीटेक बायोटेक कर सकते हो. अगर आपको रिसर्च वाली साइड पे जाना है, राइट, बीटेक बायोटेक करके आप एमबीए किसी में भी कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हेन यू विल वर्क फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फॉर द कंपनीज व्हिच वर्क इन बायोटेक्नोलॉजी. आपको बायोटेक का ग्रेजुएशन लेवल पर समझ है, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू मार्केटिंग, यू वांट टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट करियर, आप बीटेक बायोटेक कीजिए और एमबीए किसी में भी कर लीजिए. बट if you are interested in the research kind of a field, if you're interested in the development of a product kind of a field, R&D में आपका काम है, research and development में, तो मैं आपको सारी roles and responsibilities समझाती हूँ. Then you need to do the BSc, MSc and a PhD biotechnology kind of a field. ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी आपके लिए. मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को यहीं पे जाकर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं. To produce a product of improved quality for the benefit of mankind, किसी भी ड्रग को, किसी भी चीज को अगर आपको इंप्रूव करना है, क्रॉप यील्ड को इंप्रूव करना है, तो आप एग्रीकल्चर साइड पे भी बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो. Right, everybody? A biotechnologist collects and analyzes biological data. मान लीजिए स्पेस रिसर्च में भी आपको कल को बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आज भी पड़ती है. इन्वायरमेंट में आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट की रिसर्च पड़ेगी. मरीन इंजीनियरिंग, मरीन एक्सप्लोरेशन, अर्थ एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजी, राइट, इन सब चीजों में बायोटेक्नोलॉजी विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिवट जिसपे रिसर्च और डेवलपमेंट होगी. You are going to be then supervising biological technicians, technologists, even other scientists, right?
बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप लोगों का कोडिंग में इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई जेई वाला बच्चा देख रहा है, then those BTech Biotech with coding, with a with supercomputers, if you are able to make something which can then help mankind. So program and use computers to store, process, analyze data like PCR. For example, the Human Genome Project was biotechnology and supercomputers का integration, and that was just one project. मेरा इस लेक्चर लेने का एम ये कि मैं आपका होराइजन ब्रॉड कर सकूं, मैं आपको हजारों ऐसी चीजें दिखा सकूं जो पॉसिबल हैं, आप कर सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं, आपको you don't have an idea कि ये भी पॉसिबल है. So you might be interested in coding and you might also be interested in biology, and I think then biotechnology will open so many platforms for you. राइट, बायोलॉजिकल रिसर्च, गवर्नमेंट के लिए, रिसर्च फर्म्स के लिए, आजकल द टॉप लाइक फिजिक्स के लिए टॉप रिसर्च फर्म्स CERN, लाइक दैट देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज, राइट, कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं which are into research firms, medical industries, manufacturing firms prepare plans for the management of renewable resources, जो कि next 15-20 years is going to be a big crunch of water, big crunch of renewable resources. Research environmental effects of present and potential uses of land and water areas. So it is I think the scope of biotechnology through this slide I've shown you is unlimited. There is absolutely unlimited scope. How do you become a biotechnologist in India? Career path 1 क्या है? 12th में आपके पास बायो है, आपने BSc बायोटेक की, this I told you is for R&D, for academic career, for R&D, research and development career. आपने MSc बायोटेक की, and then you go ahead and do a PhD and you become a doctorate and you can work with the best research firms, you can work as a doctorate in the top universities, you can work as a doctorate in international universities abroad trying to do research and development and find out. So if you are interested in R&D career, right, मैं आपको colleges की list भी दे दूंगी, you just have to tell me in the comment section whether you want list of the top 5 colleges. This is an awareness lecture. इसके बाद मैं एक और series लेकर आऊंगी where I'm going to be telling you the top colleges of everything. Right, so that if you want a R&D career, this is career path 1. But if you want a more management career, a more corporate career, आप अपने पेरेंट्स में से किसी को बड़ी-बड़ी कंपनीज में corporate, not research and development, not the scientist career, but a more corporate career, then 12th में आपके पास अगर maths है, आप कर सकते हैं B.Tech Biotech. There are some universities जो बिना maths के भी B.Tech Biotech करती हैं, M.Tech Biotech and then followed by a MBA, right? की स्किल्स जो एक कंपनी या एक R&D फर्म, these are the skills आप देखें कि अभी आपको इंटरेस्ट है या नहीं इन स्किल्स में, so that you are able to plan कि मेरे लिए बायोटेक का करियर आगे चल के कैसा रहेगा. क्या आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्या आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसी चीजें पढ़ के यू गेट वेरी एक्साइटेड कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस. दोस थिंग्स हैपेंड इन 60s 70s. नाउ cutting edge things are happening. Are you interested in research? And what research? I see the mindset of research, because आपको बहुत ज्यादा failures होंगे. एकदम कोई ऐसा नहीं होता पहली बार में research किया top result आ गया. You might have to face a lot of problems, stepping stones. तब जाकर आपकी research कब जाकर successful होगी. Bioinformatics, that means आपको computers के साथ थोड़ा interest है. Quality control. आप biotechnology में without precision काम नहीं कर सकते. क्या आपको प्रिसिजन, एग्जैक्ट क्वालिटी कंट्रोल चाहिए. क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा नहीं होता कैसा हुआ, इससे कैसे करें, राइट? आर यू एबल टू क्रिटिकली एनालाइज अ प्रॉब्लम सिचुएशन. कोई एनवायरमेंटल इशू है, मैसिव अर्थ को डिग्रेड करने वाला कोई एनवायरमेंटल इशू है, डू यू हैव इट इन यू, राइट? क्वालिटी कंट्रोल, वैक्सीन्स बनी है कोविड-19 के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्रिटिकल थिंकिंग. उसका डीएनए आरएनए पूरा अगर बाय चांस किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का कोड कर रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स. एंड डू यू हैव द एबिलिटी टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? मेडिसिन में रिसर्च होता है, क्लिनिकल रिसर्च होती है, वैक्सीन की एफिकेसी के लिए रिसर्च होती है, बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट्स, रिसर्च एनालिस्ट, प्रोफेसर्स, लैब रिसर्च टेक्नीशियंस आर सिंपली a diploma in biotech. These are all the super awesome career opportunities that you have. इसकी डिमांड बहुत हाई है. ये मैंने बहुत अमेजिंग चार्ट सबके लिए बनाए. वेरी हाई डिमांड इन द फ्यूचर. फीस, इफ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मीडियम फीस है. Salary, if you do your MScs, your PhDs, your MTechs are very very high. And NEET अगर क्लियर नहीं होगा, with medium level of preparation for CUET, you can very easily crack it. Please CUET का कोर्स ले लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी.
क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, माय कोड इज वीडी, नीट में लिंक डाल दूंगी, राइट? सो यू कैन रियली डू इट. मैंने एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी बनाई है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे. जामिया मिलिया जिसके लिए अभी सीयूईटी होगा, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड फॉर बायोटेक. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, 2 कैंपसेस है, लॉयला चेन्नई, स्टेला मेरिस चेन्नई, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, वेरी गुड अगेन फॉर बायोटेक, प्रेसिडेंसी चेन्नई, माउंट कार्मल जो बैंगलोर के बच्चे, डीएवी चंडीगढ़, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इन चेन्नई. दीज आर सम वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स. सो मेरी तरफ से दिस पर्टिकुलर कोर्स gets a 5 star because I feel it is really worth it. Excellent plan B and plan A for students who want to do biotechnology. Don't forget to like, share and subscribe. और कौन-कौन से careers में आपको information चाहिए, just write a yo ma'am on the chat section and write down the comment. I will do it for you. Take care. Lots of love. This series will continue throughout the week. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Bye guys.